हर एक स्टूडेंट क्या वो डिज़ाइनर बन सकता है या उसको डिग्री करनी पड़ेगी? Learning through experience is something which is very crucial for UID. मैं चांदनी चौक गई थी, एक लहंगा 5 लाख का मिलता है यार। No, we are not short of contacts, we are not short of options where they can probably be. तो एवरीवन वेलकम टू कॉलेज खोजो और यार इन प्राचीन ज्ञान। और यार हम यूआईडी में हैं और यहाँ आसपास देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको ना मैनीक्यू में ये सारे ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे मेरे पीछे भी हैं। तो इन सब के पीछे का आगे चीज़ें भी बात करेंगे, क्या ये बच्चों ने डिज़ाइन करी है, बाहर से आया है और क्या कैसा कोर्स रहता है फैशन डिज़ाइनिंग का यहाँ पर, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मैम का पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और यार फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, इवन वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ओपनली मैं अभी चल रही थी तो वो सारे मेरे से बात कर रहे थे। तो मैम मुझे आप ये बता सकते हैं थोड़ा सा ये सारे बच्चों ने बनाया? ये सेमेस्टर 6 का काम है एंड राइट नाउ दे आर गोइंग थ्रू अ मॉड्यूल जो कत्योर के लिए है। सो कत्योर में वी आर लुकिंग एट कत्योर जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है एज वेल एज जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है। So in terms of the Indian context, they've learned different kinds of drapes. Learning through experience is something which is very crucial for UID. So in that case, we ensure that everything that is taught to them, they are able to try it out in person. And that's how these drapes have come. And the students, and it's an elective program, so UID also offers electives to keep it very multidisciplinary and very broad-based. So the students who were interested for couture are with me doing these. And the students who were wanting to do something like a wearable art, which is much more on an artistic expression, they are with another faculty. So that's how this course is running. And right now, this is like the first half of the course, which is towards the Indian context. And right now, they are looking at corset and ensemble building, जो global context में वो achieve करेंगे. So this is the products that you see from the students. यार अचीवमेंट्स के बारे में इतना बात कर रहे हैं ना कि मैम अपना इंट्रोडक्शन बताना भूल गई है। Yeah, hi, my name is Radhima. I'm the additional HOD for fashion design and styling at the UID NCR campus. And I bring with me 12 plus years of experience, and education has been really enthralling for me. मैम एक चीज़ पूछूंगी आपसे, एज अ क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि लाइक मेरे को फैशन डिजाइनिंग में तो उतना इंटरेस्ट नहीं था पहले, लेकिन अब हो चुका है देखने के बाद इतनी सारी चीज़ें। तो मुझे आप ये बता सकते हो जो रियलिटी होती है बिग बिग फैशन जैसे होते हैं आइकॉन, जैसे सब्यसाची हो गया आपका, काफ़ी डिजाइनर्स है, मनीष मल्होत्रा हो गया। सो उसके इंटर्न के बेसिस पर यूआईडी के स्टूडेंट वहाँ काम करते हैं? The first batch, even before we started building these, we had already built our connects. And the very first batch has been going to Rahul Mishra, has been going to Tarun Tehliani, has been interning with Pero, and the list is endless. So but we don't push our students to any one designer, because every student apne choice, in the sense that their interest, some are very good with textiles, so they look for brands or NGOs also, groups or places where they can really work with textiles. So a lot of them are also working with government initiatives. Similarly, jiska jo taste hai, so hence options are all available. You want to be great at retail, they are working with retail. So जो zone बच्चे का है interest का, जिस zone में वो student probably अपने आप को future में देखते हैं, that is where they are interning. But we are not short of contacts, we are not short of options where they can probably be, but they have to be very clear that where would they probably want to work. Because every even the couture that you're talking about, wo har ek, it's not everybody's cup of tea. So if you have the interest, you enter your segment of fashion accordingly. और मैम ये जो आइडियाज़ होता है डिज़ाइनिंग के पीछे कहीं भी, तो वो आइडियाज़ के पीछे जैसे साइकोलॉजी क्या होती है, वो क्लाइंट का हम बच्चों को समझाना, वो सब चीज़ें, ये डिज़ाइनिंग में ही इन्वॉल्व होती है, क्लाइंट का पूरा देखना कि उसको किस तरीके की डिज़ाइनिंग चाहिए, ये उसको कब से पढ़ाया जाता है बेसिकली? Second year, semester 3. And they already touch it in the foundation year, but maybe utna discipline specific nahi hota hai. But second year, the moment they enter the discipline, because at the end of the day, fashion or design is business. And business requires you to understand कि आपके segment को cater कर रहे हैं. Is that an individual client,
or is it a mass? For example, अगर आप brands के लिए काम करेंगे, so you'll be working for every garment that you design is going to be manufactured by thousands of pieces, and they will go even within India. वो अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में जा रहे हैं, so for that same design you will see that there is a different taste or an acceptance level. Yes, ma'am. So that is how in real life fashion design students are going to really work. They will be very much in tune, and that is where forecasts help us, because जो भी हम design कर रहे हैं, it is research based, it is study based, it is data based, and that is why we have WGSN available to us. It's one of the most premium forecasting companies in across the world. And you'll see that the students, how it helps is that when, for example, they are building a classroom project based on the trends studied from the site. While when they actually go into the market, they would have done a classroom project for spring summer 26. But now जब वो market जाएंगे, across all the brands, they will see some version of that. Because अगर trend follow करके उन्होंने एक हकोबा dress बनाई है, and if it is in trend, then every brand from your Indian brands to the global brands will be doing a hakoba dress in their own vision. तो उनको वो देखने को मिलता है that how did I visualize it, and ये actual retail में कैसे बना था. So that is the real life learning that you're looking at. मैम इसमें प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है, वो मुझे आप ये बता सकते हो कि कितना पैकेज चला जाता है बच्चों का? बिकॉज़ यार एक मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं चांदनी चौक गई थी, एक लहंगा 5 लाख का मिलता है यार, और डिज़ाइनर इतना चार्ज करते हैं, लेकिन उसमें बारीकी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो तो मैम उसके पीछे की क्या हिस्ट्री रहती है, थोड़ा आप बता सकते हो? So when you're looking at placements, now placements is also बहुत बड़ी realm होती है ये, because again are you placing yourself with a government segment? Are you placing yourself with brands like Arvind? Are you placing yourself with a designer per se? ठीक है? So हर एक जने का अपना segment है, and none of the segments are falling short of your package, right? Yes. But what also is important is to realize that this is the segment जो आप forever you will grow into. So your very first placement or your very first job is really important, because that is the place जहाँ पे बिना pressure के you get to touch that thing during your internship. But your first placement or your first job is where you are able to really bring your ideas into reality. You see them being made, you see them coming out to the market, and you realize how people are really taking your design or not. Exactly. And it's a learning process जो उस समय start होता है, because nobody is going to like 100% of your designs. That's the reality of life. But that is where your learning starts building. That you know, okay, this does not work or this works. So yes, that's where placement and jobs are. मैम आप मुझे थोड़ा इस चीज़ के बारे में बता सकते हो, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं ना फैशन डिज़ाइनिंग के, तो वो ये सोचते हैं कि हम खुद का ब्रांड लॉन्च कर देते हैं एंड वो बहुत अच्छा प्ले करेगा रोल, और काफ़ी शार्क टैंक वगैरह में भी काफ़ी ऐसे ब्रांड आए हैं ना जिन्होंने अपना पूरा डिज़ाइनिंग दिखलाया, शोकेस करा हुआ है, लेकिन काफ़ियों के साथ ना ये वर्क नहीं करता, क्यों कि अपना ब्रांड खुद का ऑन करके कुछ करे। तो क्या उनको किसी ब्रांड के साथ एसोसिएशन में करना चाहिए काम, फिर उसके बाद 2-3 साल बाद अगर वो सीख जाता है देन अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहिए? Sure. So there are multiple ways to approach any brand again. For example, अगर आपकी financial backing है, then maybe आपके पास वो cushion है to maybe start and play from day one. एग्ज़ैक्टली। Contacts do help to understand कि आप जिस category का के segments आप बना रहे हैं. If you're garmenting knits, if you're garmenting couture like proper handwork वाला काम, या आज के दिन even sportswear is very interesting, athleisure is very interesting. So आपके segment के हिसाब से आपको you should have contacts of people who are going to manufacture, where you source your materials, where you get them constructed, how you pack it, and how you finally make it available to the customer. Are you making a shop? Are you doing it online? During the 4 years, हम लोग ये सारे aspects touch करते हैं in terms of merchandising, in terms of marketing, in terms of branding, in terms of styling, because आपका product है, आपको वो style भी करना है. So segments of all of this is covered through the 4 years, becoming as heavy as we grow over the years. But in all honesty, we to any such students जो अपना business setup करना चाहते हैं, we always encourage them to take internships accordingly.
maybe take internships with startups which allow you to handle many more things, because एक बड़े brand में आपका structure बहुत created रहता है. Exactly. So there you might not be able to experience all the segments which might help you in business building. But जब startups होते हैं, they are really looking for work and in so many segments. So जहाँ भी आपको possibly अपना potential लगता है, there you can pitch in, and you can also understand कि अच्छा I do have a knack for this, जो otherwise you don't get to know. So to most of these students, we always encourage internship is the first place you touch base. You work with a brand which is a growing brand or which allows you. And जब आप अपना graduation project करते हैं, वो थोड़ा और लंबा समय होता है, and that time you are in semester 8, your final graduating semester. आपका level of thinking, आपका level of seriousness, आपका level of understanding is much more elevated. So that would be the second place where you can possibly experience. And then now, depending again, we come back to finances. If you have a financial backup, आपकी cushioning है, maybe you can launch a brand immediately, do a soft launch, and then you consistently work towards elevating your brand. Or you could again look at working with a brand for a year or 2 or 3 years. So you have all the knowledge bases. आपने हर एक वो चीज़ experience की है, try किया है, and you know the challenges you're going to possibly face. So always, any kind of this learning and educating yourself towards what you would want to, bring up is a better and a smarter thought. मैम एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे एज अ डिज़ाइनर आप काफ़ी डिज़ाइन करा होगा आपने क्लोथ्स हम्म। वगैरह का भी, आपको इंडियन मार्केट का भी पता होगा, आपको फॉरेन मार्केट का भी अच्छे से पता होगा, आइडिया होगा। डिफ़िकल्टीज़ कहाँ देखने को बच्चों को ज़्यादा मिलती है? लाइक इंडिया में देखने को ज़्यादा मिलती है या फॉरेन में देखने को मिलती है? Mhm. कहाँ पर ज़्यादा क्लटर्ड वे है कि लाइक आपको ना उतना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाएगी? See, as of today, opportunities are everywhere. यस। There are a few brands, yeah, a few countries जिनमें you might have some defined segments. You might have to take a smaller course to maybe and that course is mostly towards sinking yourself to how that industry works, because industry की working country wise different हो जाती है. यस। For example, India has always been very brilliant with manufacturing. So जो एक inherent knowledge हमारे पास होता है, even if a student is not a part of design, they'll still know how something gets manufactured, what the material is, what does it possibly need. ये अगर हम इसे कंपेयर करें यूरोपियन मार्केट से, वहाँ पे चूंकि मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट देयर स्ट्रॉन्ग फोल्ड, सो देयर थिंकिंग एंड डिजाइनिंग थोड़ा ओपन एंडेड हो जाता है. So they are better tuned towards thinking. And finally, for manufacturing, they have to take our help. Now that has a benefit and drawback both. Benefit is that without having the burden कि वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, आप imagine कर रहे हो, आप खुले मन से imagine कर रहे हो. But false side ये हो जाता है that what you imagine might not be possibly or technically makeable. So in that case, you have to, then as a designer, आप अपनी agility दिखाते हो that okay, I'm ready to, mold my design from here to here, and some another version of it really comes into picture. So having said that, I think opportunities are umpteen in India itself for you to be able to explore and really, live your design life. But yes, having said that, if you want to place yourself abroad, it is just about finding what is possible there. मैम मुझे ना ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी कि लाइक हर एक स्टूडेंट क्या वो डिजाइनर बन सकता है या उसको डिग्री करनी पड़ेगी बीडीएस की? See, design and art has always been a very open-ended field. Now, if you are crazily blessed, you are a designer, and all of us are designers in real life, because आप एक घर में जैसे आप एक solution figure out कर रहे हो, you've designed something. So even as homemakers, all our parents, all our grandparents have always been designers. That's the real definition of design. But what we learn within the realm of a university or a college or these classroom projects is to be able to design in a specific, in a very targeted field. Now for that, this learning either comes through these 4 years or you will be learning on the spot. So uska fark hai. Okay, so all for example, if through these 3 years or 4 years I take care that the team takes care
that हमारे डिपार्टमेंट का every student understands what materials are, what fabrics are. They are never going to attempt a print on a material जो उसके लिए suitable नहीं है. बट अगर आप इस नॉलेज के बिना सीधा इंडस्ट्री में आप घुसते, देयर ऑल्सो यू विल बी एबल टू इवेंचुअली डू वेल, बट these learnings will be on the spot while you are at the place, and it can be a little unnerving or difficult at the time. You'll have to, if that's the journey you've chosen, then you'll have to make peace with it. यस मैम। और ये ज़्यादा मेरे को लगता है कि जैसे बिग ब्रांड्स के साथ आप काम करते हो, वहाँ पर डिग्री मैटर्स करती है बहुत ज़्यादा। Of course, because what happens is that कि वो pedagogy आपकी through the education they've set up, and that's the thing about business. Is a matter of business. That means sales. That means every aspect is crucial. Every aspect has to be dealt with a certain knowledge. और अगर वो knowledge जो मेरे सुपर बॉस के पास है, who is the maybe the creative head or the design head, and वही knowledge हर एक टीम मेंबर के पास है, सो हमारी कम्युनिकेशन, हमारा वर्किंग, हमारी लैंग्वेज एक है, आगे वेदर बढ़ने में हेल्प होती है। एग्जैक्टली Yeah. आगे बढ़ने में भी हेल्प होती है, एंड ऑल्सो वाइल वी डू आवर वर्क, द मोमेंट दे से दैट एक मूड बोर्ड बना के दो, आई नो व्हाट अ मूड बोर्ड इज, एंड आई नो व्हाट अ गुड क्वालिटी मूड बोर्ड इज. So that's the power of education, because you're not going to give them 4 mood boards, get rejected, or when they say कि यार I need a design, I need a design board or I need swatch board, which should be in these many aspects. I understand that aspect. वो और हम same language बोल रहे हैं. So for us to be able to deliver and see our work come into reality becomes much easier. मैम थैंक यू सो मच मैम, आप अपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि यूआईडी में डिज़ाइनिंग को कैसे देखा जाता है, और फैकल्टी मेंबर्स आप पर कितना सपोर्ट करते हैं आपको। तो जो भी आना चाहता है बच्चा आकर मैम से भी बात कर सकते हैं, फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और बहुत सारी अगर क्वेरी है आपको तो डायरेक्टली नीचे नंबर होगा, उस पर भी जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Sure. मच मैम। Thank you.